शिशुरोग व्यापी स्पेशली माँ पेटर थिबा समय एवं जन्म हेबा परे जो कार्डियो प्रॉब्लम जो अछि सेही प्रॉब्लम को नै हमें हाईटेक मेडिकल कॉलेज तरफ गोटे स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि। चलित मास 9 और 10 तारिख 2 दिन धरि चलिछि। हम सहित अछंती डॉक्टर सर नमस्ते। नमस्ते 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 सर बोलिए सर, जो हाईटेक मेडिकल कॉलेज में जो आज चल रहा है इसमें हमारे मीडिया वालों को जानकारी देना चाहिए सर। ये उड़ीसा राष्ट्र पीपल को नमस्कार। आपकी मालूम आई एम डॉक्टर नागेश्वर राव, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। 10 साल के पहले हम ये स्टेट में क्लिनिक स्टार्ट करे। पहले हम केयर हॉस्पिटल में वो पीडियाट्रिक कार्डियक पेशेंट्स को प्रॉब्लम को एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ट्रीटमेंट completely पूरा for the past 10 years we were doing. Now we started doing at high-tech hospital after pandemic. Due to corona, so many things happened. That is the reason in this part of life we want to know all Orissa patients are doing reasonably well because of the COVID or not. We would like to check it. That's why this free camp we are conducting today and tomorrow. Now we are working at Rainbow Children Heart Hospital, Hyderabad. So we have now very good relationship with Orissa. That's why we thought we will take help of a high-tech hospital and then see the facility provision. Everything is suitable to the patients of the Orissa, whether we can really treat them here. If complex patients are there, we can treat them even at Rainbow Heart Hospital, Hyderabad. So in this regard, myself and our surgeon Dr. C.S. Reddy, Mr. Subhankar, our hospital administrator, with the help of director Dr. Rakesh, pediatrician, he knows about all healthcare problems. So we are actually working together to develop a very good infrastructure and also facility for the patients of congenital heart disease in the state of pediatric बोले तो आप आदमी क्या समझेंगे, तो इसी बारे में क्या यहाँ पे मतलब आप फैसिलिटी दे रहे हैं? So pediatric cardiac means the heart diseases in children born with the heart diseases and also they develop rheumatic heart diseases. ये hospital में basic facilities definitely there. There is echocardiogram, there is ECG, X-ray, ICU and cath lab and surgical theatres, everything is there infrastructure wise. Now we have to see the team which includes nurses, which includes doctors, administrative staff and technical people. We have to take a lot of issues into consideration to manage small babies. We are talking about babies of 1 month and 1 year, to develop the infrastructure and the team over the period of time. So we are working together and probably we are going to come with lot of overcome the lot of issues and we'll do in near future. Thank you very much. सर पेडियाट्रिक कार्डियक मतलब पहले साल बोले कि 1 महीना से 1 साल तक बच्चे जो आप उनका कार्डियो सर्जन करते हैं, कार्डियो सर्जरी होते हैं, इसी बारे में हमारे आम आदमी को क्या जानकारी देना चाहते हैं आप? So I am Dr. Chinnaswamy Reddy. I am the pediatric cardiac surgeon, a pediatric and congenital heart surgeon. That means we operate on babies with congenital heart defects. So मैं क्या बोलने को चाहिए means, you know, in India at least 2 lakh kids are born with congenital birth defects in our country. 2 lakh babies are born with congenital heart defects every year. So we are able to cater maybe about 30% of all these kids, but still we are left with 1,50,000 kids, untreated. So among these 2 lakh kids that are born, it's only about 30% of these are newborn. That means what we call 1 day to 1 month. Many of these things are critical diseases.
In fact, they amount to what is called infant mortality, infant mortality. So it's a congenital disease doesn't mean that only in the pediatric age group or beyond 1 year, 2 years or 10 years. It starts from day one. Many of these kids may require the intervention as early as day one, and depending upon the diseases, because there are a lot many diseases in the heart. It's not just one disease, though the heart is one. There are lot many number of diseases. Likewise, lot many number of procedures, either interventions or surgeries. So depending upon the disease and the severity of the problem, and there is timing of the procedure is decided. सर इससे पहले तो आम आदमी सोच रहे थे कि तो छोटे बच्चा को कैसे तो हार्ट सर्जरी हो सकता है, तो ये भी मालूम किसी को मालूम नहीं था कि ज़्यादा भी मतलब खर्च ज़्यादा हो जाता था, तो इसी बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? So today we are fortunate that once upon a time we are all going to the West for the medical treatment, especially the treatment of the heart, okay, for cardiac diseases. Of course, as we all know, it's a relatively a new specialty. Cardiology and cardiac surgery is one of the new specialty in the medical field. With the development of the technology, especially with the invention of the heart-lung machine, way back in 1953 when the first open heart surgery was performed, that is when the growth of the cardiac surgery, the heart surgery started off. But it took another several 2, 3, 4 decades for it to stabilize, standardize, and slowly what we were operating for a little older kids, then gradually down to a year, few months, and to day one. There are many kids, newborns with congenital disease which require operation as early as day one. With the advance in the technology and the heart-lung machine and the various drugs that's available, we could able to precisely perform the operation and save many of these babies which would have otherwise died. हाईटेक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का डायरेक्टर डॉक्टर राकेश पाणिग्राही सर आपण बाती केमती लागुची जे ओडिसा रे ओटे नुवा धरनर चिकित्सा पाको जाउची मा पेटरे थिबा शिशु एवं मा पेटरे जन्म होइबा इन्फेंट बेबी रो कार्डियो सर्जरी हेई परिबा जहा विज्ञान बहुत आगो जाईची एवं हाईटेक मेडिकल कॉलेज ता उपलब्ध होबा जाउची आपण केमती लागुची आज जो कथा उद्घाटन हला? आज्ञा नमस्कार, मु डॉक्टर राकेश पाणिग्राही, डायरेक्टर हाईटेक ग्रुप्स। आज गोटे निश्चित गोटे बहुत भल दिन आशा गोटे गर्वकर दिन कहीं आज डॉक्टर नागेश्वर राव इज ए रेनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर CR रेड्डी ही इज ए रेनाउंड कार्डियक थोरासिक सर्जन पीडियाट्रिक स्पेशली पीडियाट्रिक डिवीजन रे ये दुईटा माने सबू थ्रू आउट इंडिया दे आर बिग नेम आउ से बिग नेम आज हाईटेक रे जोड़ुचंती विद द नेम ऑफ रेनबोस सेटा आम गर्वकर कथा आउ स्पेशली लोक क्वालिटी सर्विसेस लाइक कॉर्पोरेट्स रे जमती पाउचंती दे विल गेट इन ए वेरी चीपर रेट्स एंड वेरी नॉमिनल प्राइसेस रे जो येटा पाइबे चिकित्साटा पाइबे दे विल बी सैटिस्फाइड टू देयर कोर कहीं माने यही धारणार लोक विभिन्न प्रकार माने खर्च करी हैदराबाद बाहर को अन्य स्टेट को जाऊले अहमदाबाद एना आपण निज स्टेट रे किछि पैसा न खर्च करनु विद इन योर लिमिट्स सबू प्रकार चिकित्सा पाई आराम से घर को जाई परियो। दैट इज आवर मेन एम। हम सहित अछंती रेनबो चिल्ड्रंस हार्ट इंस्टीट्यूट निर्देशक जन आमे ताका सहित बुझिनबा जे हाईटेक सहित जो सहभागिता हैला रेनबो चिल्ड्रंस हार्ट इंस्टीट्यूट एवं शिशु चिकित्सा क्षेत्र में एक माइल खुलबा एक वैप्लविक परिवर्तन आसीबा। सर आपको ओडिशा में हम लोग स्वागत करते हैं। तो रेनबो हार्ट इंस्टीट्यूट जो आपने ओडिशा में हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आपने शुरुआत की है जो शिशु चिकित्सा बारे में, तो हार्ट सर्जरी होगा इन्फेंट बेबी का, ये आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे डॉक्टर राकेश जी का, जो कि मैनेजमेंट है यहाँ के हाईटेक मेडिकल कॉलेज, एंड डॉक्टर स्मिता का कि हम लोग यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हैं।
मैं बहुत ही खुश और बहुत ही आशावादी इंसान हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि उड़ीसा के लोग काफ़ी ज़्यादा इस हमारी सेवाओं से बेनिफिट हो पाएंगे। और रेनबो चिल्ड्रंस हार्ट इंस्टीट्यूट एक बहुत ही पुरानी इंस्टीट्यूट है। हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरीज़, हाई एंड सर्विसेज इन कार्डियक साइंसेस करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उड़ीसा में हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जिनको इस तरह की किसी तरह की कोई सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्हें सही चिकित्सा सुचारू रूप से सही समय पे मिल पाए, और यही हमारी आशा रहती है और रहेगी, और इससे कई लोगों का भला भी होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम सभी यहाँ पे चाहते हैं कि स्टेट ऑफ उड़ीसा, स्पेशली भुवनेश्वर और एनी नियर बाई सिटीज़, ये सारे लोगों को इस सेवाओं का आनंद मिले, और साथ में साथ हम काम करके किन्हीं कोई पेशेंट्स जो बच्चे होंगे उनको कहीं ना कहीं सेवा दें, उनकी ज़िंदगी को संवारें। बहुत धन्यवाद। आम हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तरफ आपको बहुत धन्यवाद। रेनबो हार्ट चिल्ड्रंस हार्ट इंस्टीट्यूट हाईटेक मेडिकल कॉलेज रे एक स्वतंत्र सुविधा सुजोग जोगे दिया जाउछि, एवं ओडिसा समस्त शिशु चिकित्साविद माने मध्य आग्रह हेबे एवं शिशु रोग मध्य दूर हबो, एवं शिशु टिके पिरामानकर जो गुरुत्वाकर्षण शल्य चिकित्सा अछि ता मध्य दूर हबो, एवं ताहा आगामी दिन स्वतंत्र भूमिका निर्वाह करिबो। नमस्कार। थैंक यू।